बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा फेसबुक मार्केटिंग। और फेसबुक मार्केटिंग में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि फेसबुक मार्केटिंग क्या है, फेसबुक मार्केटिंग किस तरह से करते हैं, फेसबुक पेज कैसे बनाते हैं, ऑप्टिमाइजेशन कैसे होती है, एड प्लेटफॉर्म्स कैसे यूज़ करते हैं, मीडिया प्लानिंग कैसे होती है, इस पर मीडिया बाइंग कैसे होती है, उसके बाद क्रिएटिव इसका किस तरह से वर्क करता है, और फेसबुक ओवरऑल हम ऐसे एज ए एडवर्टाइजिंग टूल कैसे यूज करते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं कि वाई फेसबुक, कि हमें फेसबुक क्यों इस्तेमाल करनी चाहिए। नंबर वन, कुछ तीन चार वजूहात कुछ रीजन मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। उनमें से सबसे पहले क्या है कि फेसबुक इज द मोस्ट पॉपुलर नेटवर्क, मोस्ट पॉपुलर सोशल नेटवर्क। सो अगर आप स्टेटिस्टा पे जाएं और जनवरी 2021 की आप रिपोर्ट निकालें, आप खुद भी जा सकते हैं इस पे। सो वहां पे लिखे हैं मोस्ट पॉपुलर सोशल नेटवर्क वर्ल्ड वाइड एज ऑफ जनवरी 21, रैंक्ड बाय नंबर ऑफ यूजर्स इन मिलियन। फेसबुक अगर आप देखेंगे तो 2.7 बिलियन यूजर हैं इसके, यूट्यूब के 2.2 बिलियन यूजर्स, या फिर 2291 मिलियन यूजर, व्हाट्सएप के 2 बिलियन, फेसबुक मैसेंजर के 1.3 बिलियन, इंस्टाग्राम के 1.2 बिलियन। अगर आप पहले टॉप 6 में देखें तो फेसबुक, व्हाट्सएप इज owned by फेसबुक, मैसेंजर इज owned by फेसबुक, इंस्टाग्राम इज owned by फेसबुक। सो पहले 6 में, जो पहले 10 में अगर आप कह लें, तो सबसे पॉपुलर जो साइट्स हैं, सोशल साइट्स, वो owned by फेसबुक ही है। सो उनको फेसबुक ही ऑन करता है। सो सबसे पहले रीजन ये है कि दिस इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर सोशल नेटवर्क, सो दैट्स वाई हम फेसबुक यूज करते हैं, इसलिए फेसबुक मार्केटिंग करते हैं, पहले रीजन। सेकंड रीजन, कुछ यूजेज के स्टैटिस्टिक्स हैं जिसकी वजह से हम फेसबुक यूज करते हैं। पहले नंबर पे अगर मैं देखूं तो 30% ऑफ इंटरनेट यूजर्स यूज फेसबुक मोर देन वंस अ डे। हालांकि हम लोगों में से बहुत सारे लोग टीवी एक दिन में एक बार नहीं देखते, नहीं यूज करते। 45% of people get news from Facebook. 40% of people said they would share their health data with Facebook. There are there are an estimated 81 million fake Facebook profiles. अगर इसको 2.27 बिलियन के कंपैरिजन में 81 million fake profiles doesn't matter. The most popular pages in the Facebook main page with 213 million likes. Samsung is second with 159 million, while Cristiano Ronaldo is third with 122 million. So these are most popular pages on Facebook. Facebook account for 62% of social logins. 200 million people use Facebook Lite. 22% of the internet times is taken by Facebook. Users spend an average of 20 minutes per day. In a month, the average user likes 10 posts, makes 4 comments, and clicks on 8 ads. Facebook generates 4 new petabytes of data per day. Users generate 4 million likes every minute, and more than 250 billion photos have been uploaded to Facebook. This equates to 350 million photos per day. So 350 million photos Facebook पे हर डे को अपलोड हो रहे होते हैं। So ये है Facebook के कुछ यूजेज स्टेटस। सो इन यूजेज स्टैटिस्टिक्स की बुनियाद पे कि हमें पता है कि यूजर इसके साथ कितना एंगेज होता है, कितना इंटरेक्ट करता है, उसकी इसके साथ एसोसिएशन क्या है, उसकी इसके साथ एफिलिएशन क्या है, सो हम, और उसकी अट्रैक्शन क्या है बेसिकली इसके साथ, और क्यों फेसबुक एक बिजनेस को, ब्रांड को, या कम्युनिटी को, या ऑर्गेनाइजेशन को यूज करनी चाहिए, वो ये सारे बिकॉज ऑफ इट्स यूजेज स्टैटिस्टिक्स। थर्ड रीजन जो हमारे पास है, कुछ मार्केटिंग स्टैटिस्टिक्स हैं। फेसबुक रेवेन्यू from ad spend is 1.9 time bigger than Q1 2019 compared to Q1 2017. There are over 60 million active business pages.
and 2 billion people can be reached through Facebook ads. But only 6 million of those businesses pay to be active advertisers. So Facebook claimed 19% of 70 billion spent on mobile advertising. And 78% of Facebook advertising revenue comes from mobile ads. In 2015, Facebook average advertising revenue per user was $11.96. So these were some Facebook marketing statistics के 60 million active business pages हैं, जिसमें 70 billion का 19% Facebook mobile advertising पे spend करता है. So these are the mobile marketing statistics. This is the third reason that we should choose Facebook as a marketing tool. Another reason is powerful ad platform, जिसमें हमें डिफरेंट इनसाइट्स मिलती हैं, डिफरेंट एट्रीब्यूशन सेटिंग मिलते हैं, बिड स्ट्रेटजीज, डिलीवरी रिजल्ट्स मिलते हैं और अपने डिफरेंट मार्केटिंग कैंपेन्स ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकते हैं. इट्स अ वेरी पावरफुल एड प्लेटफॉर्म एज कम्पेयर टू अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स. आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को उठा के देख लें, उसमें सबसे ज़्यादा पावरफुल एड प्लेटफॉर्म फेसबुक का है. एंड द फिफ्थ रीजन इज फेसबुक इनसाइट. फेसबुक इनसाइट is an absolute must-have if you want to have a paid media capability that is truly powered by fact-based insights to go to market. Audience Insights helps you learn more about the people who matter to your business, so you can create more relevant content for them. We built this tool based on your overwhelming feedback that crafting the perfect message starts with knowing your audience. For us, it lets us actually do what I think an agency is meant to do, and that's consolidate and consult. And it's the only tool that's actually built in that same spirit. Audience Insights reflects the data people share with Facebook, like their demographics and interests, as well as external data from our select third-party data partners, such as whether they're in the market to buy a new car. This data allows you to compare the characteristics of your target audience with the overall Facebook population to find out what's unique about them. You'll find Audience Insights within Ads Manager. First, select the audience you want to learn more about by creating a new audience, looking at people you're connected to on Facebook, or opening an audience you've previously saved. Let's create a new audience. Next, define your audience. Using these filters, you can hone in on an audience you're interested in. Let's say you want to raise awareness of a new luxury women's fashion brand that you're launching. You can select the cities where your stores are located, the target age group, women, and perhaps college grads. Looking at information such as demographics or purchase behavior will help you uncover unique characteristics of your audience. You can use that information to inform your message and creative, and even your marketing strategy. Here, within demographics, you can see this audience is likely to be considered a fashionista, which can inform your messaging. Their interests include a variety of news sites and TV shows, which could impact your marketing partnerships or campaigns you run during TV premieres and finales. Within purchase behavior, this audience is likely to buy beauty products, so you could consider featuring these products in your Facebook ads. Finally, this audience is less likely to buy online than the rest of the US Facebook population, which highlights the importance of creating a quality in-store experience for your customers. You can find the same actionable insights about your fans or your custom audiences. We know it's crucial for you to understand your customers, and Audience Insights enables you to do this at a much deeper level than ever before. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.